Hi Gagan, how are you? Good, sir. Thanks for inviting Okay. me today. Yeah, nice meeting you ओके again. तो गगन आपके साथ में आज आपका पूरा जो जर्नी है अभी तक की वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंड यू आर अवेयर दैट द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियोस इज लाइक many of my students the students will see this and you know they get inspiration कि आपकी जर्नी कैसी रही है क्या क्या आपने किया है अपनी लाइफ में कैसे ऐसे आप गए हैं कॉलेज में कैसे आप प्रोसीड किए हैं और आई रिमेम्बर यू वर देयर इन ईसीपी इन 2013 गगन एंड आप बंदा Yes, sir. सिंह बहादुर से पास आउट हैं आप आई थिंक यू वर इन द Yes. बैच 2014 वाला बैच बंदा सिंह बहादुर Yes. का सो उसके बाद आप आईआईटी कानपुर गए नाउ यू आर इन स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी इन स्वीडन सो स्टार्ट Yes, sir. करते हैं गगन आप अपना बैकग्राउंड खुद बताएं विच पार्ट ऑफ पंजाब और इंडिया यू आर फ्रॉम कहाँ से हैं आप एंड योर जर्नी इन बंदा सिंह बहादुर आपकी ब्रांच क्या थी और उसके बाद की जर्नी आपकी So just to make sure, so should I speak in its mode of communication, English or Hindi? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन आप हिंदी में Okay. बोल सकते हैं पंजाबी में बोल सकते हैं इंग्लिश में बोल सकते हैं सो Okay. इट्स ऑल फ्री टू यू या सर अगर मैं पंजाबी स्टार्ट हुआ फिर सर चेंज नहीं होना हाँ मेरे को पंजाबी में so हाँ okay so yeah so I या am गो from अहेड Kagga. Kagga it's a very small town in Patiala district. So ओके I did my schooling from DIB Public School Kakrala. हम्म And then in plus one, plus two, I went for IIT JEE coaching in Chandigarh, but my school was Buddha Public School, Sumana. हम्म And from there, I did my Btech in Baba Banda Singh Bahadur Engineering College, Fatehgarh Sahib. हम्म So the reason why I specifically told that I went for this IIT JEE coaching in plus one, plus two is the reason why I went to IIT afterwards. So I didn't do studies very well in those plus one, plus two. So I didn't हम्म took it seriously. I had no idea like how to approach हम्म uh, exam like IIT JEE. What are the हम्म things that are needed? How much hard work you have to put in. So in हम्म school, I was that kind of student who did good in studies, but I was mostly interested in sports. So हम्म for like any other average student, for the better part of the day when you're at home, you spend your whole of the evening in playing cricket or spending time with friends, and you do your homework, and somehow you get good in studies in school. So I have the same philosophy going into plus one, plus two when I went for the ITJE हम्म exam. But as you हम्म know, it's a very hard exam, and that thing doesn't work out there. So you need a हम्म lot of hard work. But since I was not that good, or I didn't know the amount of hard work that I had to put in, so हम्म I ended up in Banda Singh Bahadur. So हम्म through state college exam for engineering. हम्म हम्म Uh, so I did my bachelor's there in mechanical engineering. I did my bachelor's with the distinction हम्म from Baba Singh Bahadur. And then in 2013, when I came to know about this GATE coaching and the opportunity to go study further, so at that time I joined your institute in Panchkula. हम्म हम्म And in 2014, me along with I was very lucky with a lot of other friends, Punejinder, Latinder. We all went to IIT Kanpur for हम्म integrated degree हम्म in MTech and हम्म PhD. हम्म And after I finished my PhD, I got two job offers, even like three job offers at the same day. So I got offer from BITS Pilani हम्म to join as a assistant professor. And I हम्म think I remember it was like on 24th of January. And on the हम्म same day, I got the offer to join as a postdoc at Stockholm University in Department of Physics. And हम्म later, 1 week later, I also got the email. I have applied for Swiss fellowship for postdoc, and that was also granted. हम्म So हम्म within like 1 week, I got three opportunities. हम्म And after discussion and more of also because of my family situation, my wife is also PhD from IIT Kanpur in physics. So we गुड decided to join as a postdoc here. So now हम्म I am postdoc in Stockholm University for almost 3.5 years now. ओके Yeah. वंडरफुल ओके सो गगन ये आपका आईटी कानपुर में एमटेक एंड पीएचडी किया है आपने तो व्हाट वाज द ड्यूरेशन कब से कब थे आप आईटी कानपुर में So I joined IIT Kanpur in 2014, अच्छा and I finished my thesis in 2020. ओके Yeah, but since my wife was still there, so I've joined as a postdoc at IIT Kanpur, and I was there till April 2022. और आपका रिसर्च एरिया क्या था आईटी कानपुर में
So my research area is metamaterial absorbers. So it's an interdisciplinary topic Okay. where we've so I don't know if you heard about like stealth absorbers. So there's even a company come out of the work that I have done in both of my master thesis and PhD thesis. So I developed absorbers. My main area of research was fabrication of large area absorbers, so that it can be used in the practical applications. So I developed absorbers into specifically in three different by using three different manufacturing technology. One is laser machining, where I use optically transparent but absorption in this 8 to 12 gigahertz band. Then I use screen printing to develop absorber, flexible absorber that on like a close. From that particular, I got patent in both those technologies, and this particular patent has also been bought by a startup company, and known as Analakshmi, if I'm not wrong. So Okay. now they're taking it to a large scale, and if it can be used. And then another one is like using two photon polymation, which is a like technique that can make single micron features or one below that for IR range. So that was my area. ओके सो गगन, ये जो आप अभी आईआईटी, अभी आप यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में हैं, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में. सो आई एम गेटिंग क्यूरियस कि आप तो मैकेनिकल बैकग्राउंड के हो, तो यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, आप किस फील्ड में कर रहे हैं? हाँ सेम सो फील्ड मेरा अभी भी अब्जॉर्बर ही है, बस अब वो रजीम चेंज हो गई है. पहले जो मैंने पीएचडी में किया था वो स्टेल्थ के लिए था. दैट वाज लाइक फ्रॉम 8 specifically focusing from 8 to 12, but a bit of large like 6 to 14 gigahertz, because that is the range of stealth that we needed, because most of the radars that we have, specifically radars that been used by the fighter jets, that works from 8 to 12 gigahertz. So I was developing absorber for this, but now what I'm doing is I'm developing absorber from 70 gigahertz to 250 300 gigahertz. So now the application is in cosmic microwave background, so it's astrophysics department. So after Big Bang, so this is the first light that was seen, like when finally the universe become expanded enough, and from opaque distance to transparency, this was the first light that was present in universe, and it's still present, but it was it's very weak, but it's present throughout the universe. So what scientists are doing is trying to capture it, what they could, and then study its its different mode. So for this they have like big telescopes throughout the world, like there's one telescope at South Pole, there's another telescope at Atacama Desert in Chile. So there's like huge funding in those. So in those telescopes, in this pipeline of those telescopes, they put absorbers so as to cancel the noise. So that they don't have any reflection of waves coming from some kind of something that hit the ground and then goes into it, or if something is not coming incidentally. So they don't want those particular waves to reach the detectors, because the CMB signal itself is too weak, and if you don't get rid of the noise, then it will be very difficult to differentiate between the noise level and the actual signal that you are getting. So I'm working on absorption of that particular. So you mentioned that your wife is also PhD in physics from IIT Kanpur. Yes, so is she also working in this university with you? Yes. Okay. You are in the same department, physics department. Yeah, we're in the same physics department. Luckily, she's from physics, and I joined as a postdoc in physics department, so it's much easier for her to get a postdoc. Yes. Okay. Wonderful. Yeah. So she's also from which part of India? She's your wife? She's from Punjab. Sorry, Punjab only. Yeah, she's from Punjab only. Okay, wonderful. अच्छा गगन, ये आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली, आपने बताया कि मेरे को बिट्स प्लानी का भी मिला और भी अपॉर्चुनिटीज मिली. So why you thought of taking this other than कि फिजिक्स है और आप दोनों को यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, लेकिन पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप बेसिकली ट्रांजिशन फेज होता है. क्यों करना होता है पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, एंड इसका क्या बेनिफिट होता है? अभी आपको 3 साल हो गए, तो क्या ड्यूरेशन होता है इसका, और कितना टाइम इसको किया जाता है, और इसके बाद की ऑप्शंस क्या होती हैं? सर, इसका ड्यूरेशन तो कोई फिक्स नहीं है.
ये वेरी करता है, जैसे इंडिया में, अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया के हिसाब से बोलूँ, ये वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. Like from mechanical department, so again it's a transition between PhD to a full-time job as a assistant professor. तो आपका जो पर्टिकुलर स्ट्रीम है उसमें कितनी पोस्ट जॉब की जरूरत है वो आपका स्ट्रीम ही डिफाइन करता है. ऐसे अगर आप साइंसेस में हो तो अगर आप देखो तो IITs में जो प्रोफेसर जा रहे हैं उनके पास 5 साल 6 साल की पोस्ट जॉब भी होती है. तो साइंसेस वालों को थोड़ी सी लंबी पोस्ट जॉब चाहिए होती है, बट इंजीनियरिंग में 2 साल 3 साल काफी सफिशिएंट माने जाते हैं. इवन मेरे जो बैचमेट थे उन्होंने बिना पोस्ट जॉब के भी they are in IITs, some IIT Patna, IIT Bhubaneswar, so they went to IITs. So the reason what I felt is like it's important to postdoc is you get a different perspective of doing the work. So the work that has been done in Europe and the work culture is far like it's very different from what we're doing the work culture in India. So I'm not saying one is good, one is bad, but yeah. So another thing is the relations. So when you come out, you know different. So now initially I was working in absorbers, but now I'm also working in absorber. But I never know that absorber could be useful in this particular field also. And now I have relations. So for example, if I go back to India, I join any IITs or BITS again. So then I can have international collaborations. I can ask them, okay, so manufacturing in India will be much easier, much cheaper. And yeah, so I can develop these absorbers in India for your telescope. Okay. Yeah. So connection is something that you get by doing postdoc, and of course. ओके गगन, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के बाद क्या आप अदर देन एकेडमिक्स जैसे टीचिंग एकेडमिक्स या ऐसी जॉब्स के अलावा कैन यू थिंक ऑफ गेटिंग इनटू इंडस्ट्रीज आल्सो एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज? Actually, I have seen like particularly here in like Sweden, out of 10 postdocs, 8 are going for industry job. So only 2 are turning into be academician. One reason is that it's a bit difficult to get into academia in Europe. Like I've seen like you have to be really passionate about research if you want to be continue as academician in Europe. But yeah, so I think there is no barrier of saying like, you know, I've done postdocs, so it's difficult to get a job. There's no such barriers. I would say, you know, even it's just it increases your so whatever opportunity you have after bachelor's, it has only been increased after doing postdoc in industry. So yeah, if you have industry which works in your field, like any mechanical anything that works in manufacturing, I think I can apply for that. And given that I'm done postdoc here, I'm already in the system, so it will be much easier for me to get that job as compared to if I would have applied from India. So even people goes to industry in India too from after doing postdoc. So ओके गगन, देखो आईआईटी कानपुर के बारे में तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स इंडिया में तो जानता है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप ने स्पेंड किए 6 इयर्स. नाउ यू आर इन स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, बहुत नाम सुना है इसका भी, और कई बार तो पता नहीं आई एम करेक्ट और रॉन्ग, बट जो नोबेल प्राइजेस होते हैं उनके साथ भी स्टॉकहोम का नाम आता है. तो आप मेरे को बताओ ये यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताओ गगन, क्या है इस यूनिवर्सिटी के बारे में? एक्चुअली सर मेरा भी एक पेपर, जो सबसे पहला पेपर यहाँ पे आया था, उनमें एक नोबेल लॉरिएट थे फ्रैंक बेल्जैक, तो उस पेपर में मैं भी को-ऑथर था, वो भी को-ऑथर थे. अच्छा, गुड है. सर मैटर ऑफ प्राइड फॉर गुड. Yeah, exactly. So even like after when I was started my postdoc here, after 1 week exactly, he visited our lab. So we're working, we're working on instrumentation and dark matter, for an idea that he proposed. So he's a theorist, so we try to implementing it in the lab. So we visited the lab. So yeah, so that's so Stockholm University is okay. So in Sweden there are like 3 to 4 universities which are very famous. First is KTH, and another one is Chalmers. There's one Lund. So these 3 universities particularly for engineering. But Stockholm University is more of a, like, you know, for everything, like more sciences, arts, and it is a huge university. But it has only sciences, not it doesn't have engineering department. So it's a very well known for this physics, like particularly the department that I am in. So if we see ranking, I think it involves first 50 or something in department of physics, and yeah. So and it's
just like next to each other, the KTH and the Stockholm University. And even the department with the Department of Physics, the building that we are in, it's a combined building of like a KTH and Stockholm University. So Department of Physics for both KTH and Stockholm University are in the single building. Okay. Yeah, so you can interact with the people from KTH as well. So I don't know like what else I can tell you about this, but yeah. स्वीडन जो कंट्री है गगन, इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और कितनी बड़ी कंट्री है ये? जैसे सम स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया एस्पायर्स टू ज्वाइन सम यूनिवर्सिटी इन स्वीडन, दो यू मेंशन सम नेम लाइक केटीएच एंड ऑल, तो कितनी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां से इंडियन स्टूडेंट्स एस्पायर कर सकते हैं कि हम मास्टर्स या पीएचडी या ऐसा पोस्ट डॉक वगैरह करें? बहुत है सर। इट्स लाइक अगर मैं सिर्फ अगर मुझे कंपैरिजन देना होगा तो पंजाब जितनी बड़ी स्टेट है तो लैंड में तो स्वीडन पंजाब से बड़ा है। हाँ, एरिया वाइज तो बड़ा है, बट जितनी आप मान लीजिए कि अगर पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी हो, अच्छा, वैसा सेम है स्वीडन में। अच्छा, कि आप स्टॉकहोम में हो तो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है, केटीएच है, अगर आप मेडिकल फील्ड बायो में हो तो कैरोलिंस्का के इंस्टीट्यूट है जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है कैरोलिंस्का। उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकलते एक छोटा सा शहर आता है नॉर्थ शॉपिंग, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, लिंक शॉपिंग यूनिवर्सिटी है, उमिया एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, चार्ल्मर्स बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, गौतमबर्ग यहाँ से वॉल्वो आता है। और स्वीडन की सर बहुत खास बात है, आप जस्ट थिंक ऑफ अ बिग नेम एंड यू विल समहाउ फाइंड its roots were in Sweden, like Volvo, Scania, Spotify, IKEA. So even जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ is funded by the owner of Electrolux. Electrolux is also Swedish company, and he donated 14 billion krona like around 30-40 years ago to make this building. So this is the building which is specifically for postdoc research, international researchers. So I am in the middle of Stockholm, like at the center of Stockholm, and my rent is like subsidized by 40% just because of that single person. So okay, and yeah, so the thing is like because of these big companies, startups, they all came from Sweden. So most of the people who do like masters, there's a huge I have like number of students who are doing masters in KTH, and most of them somehow get jobs either in Scania or Volvo or any other company. Even there's Uppsala University, which is just 50 kilometers from here, and it's also a big university. यस, वेरी वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। तो ये जो किसी यूनिवर्सिटी जितनी आपने मेंशन की, अगर यहाँ से कोई मास्टर्स कर रहा है स्टूडेंट, तो अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं गगन उसके बाद? सर यहाँ पे ऐसे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा व्हीकल बेस्ड कंपनी स्कैनिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे केटीएच में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं जो व्हीकल को लेके हैं, जैसे वाइब्रेशन हो गया, ऑटोमेशन हो गया, व्हीकल बॉडीज पे। तो वो जॉब करते हैं तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स तो स्कैनिया में ही चले जाते हैं। उसके बाद नॉर्थ वोल्ट थी विच अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई अभी, तो नॉर्थ वोल्ट में बहुत लोग जाते थे। फिर यहाँ पे एक ट्रेन की कंपनी है, मैं उसका नाम बोल गया, ट्रेन बनाती है। ओके, तो वो कंपनी है यहाँ पे, वॉल्वो है यहाँ पे। और फिर आईटी में आई वुड से लाइक Sweden's IT sector somehow is run by so I play cricket, and everyone that I meet who are Indians, they are in IT sector. So like huge तो बहुत लोग हैं जो आईटी सेक्टर में, आईटी बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, एंड स्वीडन एज अ कंट्री कैसा लगा आपको लिविंग के हिसाब से, जैसे रहने के हिसाब से? सर इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको काम करते हुए भी रिटायर्ड लाइफ जीनी है तो स्वीडन इज द बेस्ट कंट्री। इससे अच्छा वंडरफुल, वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी है लाइन आपने बताई। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस पूरा है? वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है सर। आपको 9 से 5 है, बट मतलब इतना है सर यहाँ पे है कि जो फर्क है, अगर आपका 9 से 5 है तो 1 से 2 ब्रेक है, तो लोग 9 से 1 और 2 से 5 पूरा काम करेंगे, मतलब दे आर सीरियस अबाउट देयर वर्क। बट 5 बजे के बाद no one will ask them, no one even like no manager, no PI, no supervisor will even send you a message after 5 PM. So that's good. तो बहुत अच्छा है, इवन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। So they're like really good if you have kids. So I have a 11-month daughter now. So
the policies हम्म, that they have for kids is like amazing. अच्छा, आप गगन ये बताओ, जैसे आपने एजुकेशन वहां पे कर लिया, जैसे किसी ने मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया, नॉर्मली स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि सर ऐसा कंट्री बताओ जहां हम हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद हायर एजुकेशन के बाद हमें रहने का अपॉर्चुनिटी भी मिले, जॉब्स भी मिले, और पीआर एक टर्म होती है, परमानेंट रेजिडेंसी, हाँ सर। कि वो अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाए, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर जॉब तो मुझे लगता है कि जितने मैं लोगों से इंटरेक्शन किया हूँ, खास करके जैसे जो केटीएच में आए हैं, क्योंकि वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे ही मैक्सिमम इंडियंस आते हैं। हम्म, तो जॉब तो 80% ऑफ द टाइम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, अगर यहाँ से स्टडी की है तो जॉब मिल जाएगा। और पीआर हम्म, का सर इनका मतलब सिंपल फंडा है। अगर आप यहाँ पे जो अब तक है कि आप 4 साल अगर आप टैक्स पे कर रहे हो, अच्छा, तो आप पीआर हो जाओगे। तो आप तो कर रहे अगर हो आप, एज पोस्ट डॉक्टरेट। हाँ सर, एक्चुअली मतलब मुझे 3 साल हो गए, तो अगर मैं 1 साल और अच्छा। रहूंगा और मैं पीआर हो जाऊंगा। अच्छा, और टेल मी फिर वन थिंग, व्हेन यू आर डूइंग योर पीएचडी, दैट टाइम आल्सो यू आर टैक्स पेयर, नो? या या पीपल So the गॉट person पीआर। who does PhD eventually gets PR, right? हाँ सर, ये मिली है, मतलब कुछ कुछ दोस्तों ने पीआर लिया है इसे। Okay, good. हाँ And what are the तो advantages of getting PR? you have Europe open for you. Like if you are Okay. PR or citizen of Sweden, Hmm. and the difference between PR and PR का मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं लगता, सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक लगता है कि क्योंकि यहाँ पे जो स्वीडन में अच्छी चीज है कि जो राइट्स, अभी जैसे मेरे पास Hmm. पीआर नहीं है, तो Hmm. यहाँ के सिटीजन के और मेरे सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो वोट डाल सकता है, मैं वोट नहीं डाल सकता। Hmm. अदरवाइज एजुकेशन मेरे बच्चे के लिए भी फ्री है। इवन मैं अगर डिपेंडेंट वीजा पे भी है, जैसे अभी अगर मैं मेरा वीजा है, मेरी वाइफ डिपेंडेंट है, ऑल्दो शी इज पोस्ट डॉक, बट इफ शी इज ऑन डिपेंडेंट वीजा, हर Hmm. एजुकेशन इज ऑल्सो फ्री, हर मेडिकल Okay. इज फ्री, माई मेडिकल इज फ्री। सो Hmm. ऐसा कोई ऐसा भी नहीं है कि जो जैसे मेरा बच्चा ही फ्री चढ़ेगा बस में, जो पीआर है, सिटीजन है, उसका बच्चा ही फ्री ही चढ़ेगा बस में। Okay. सिर्फ Hmm. पीआर पीआर एक मेंटल ब्लॉक है। सिटीजनशिप के लिए मानता हूँ, अगर सिटीजन आप हो जाते हो एक, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं भी रहो। पीआर Hmm. के लिए आपको कुछ कंडीशंस होती हैं, जो हमेशा रहता है कि आपको 1 साल में 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता रहना पड़ता है। आप Hmm. पीआर होते हो तो थोड़ा सा कहीं जॉब में मतलब 10% फर्क पड़ जाता है आपको हायर करने की जो Hmm. प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपका वो बैक चेक, ये सब चीजें Hmm. रूट रूट में नहीं आती। Hmm. बट अगर Hmm. सिटीजन हो, उसका बहुत बड़ा फायदा है कि आपके लिए पूरा यूरोप ओपन है। Okay. आप, हाँ, Hmm. तो आप कहीं भी जाके जॉब, जर्मन जाके जॉब करनी है वहां करो, दिस नो Hmm. लिमिटेशन, nothing like Hmm. that. And Okay. the difference Hmm. between PR and citizenship is just 1 year. If you stay for 1 more year, you'll get एज अ citizenship. पीआर। अच्छा, ये भी बहुत हाँ बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज यूएस में तो पीआर मिल भी जाए, लेकिन सिटीजनशिप इज अ बिग क्यू हाँ, एक्चुअली। बिल्कुल तो वो डिफरेंस बिल्कुल तो है। बिल्कुल। अच्छा गगन, अब आपके 10 साल हो गए हैं ग्रेजुएशन के, एंड यू हैव डन योर मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट 3 साल, यू आर हाँ पेइंग सर। टैक्स टू स्वीडन, एंड ऑलमोस्ट सेट, जिसको बोलते हैं यू यू आर सेटल्ड नाउ, एंड मिडिल लेवल पे हैं अपने करियर के। तो 10 साल कंप्लीट हुए हैं, हाउ डू यू सी योर जर्नी ऑफ 10 years? Amazing, to be honest. Like yeah, never. What you can say, be grateful, because I still think like my time at IIT Kanpur was the best time of my life. Hmm. Even Atender is visiting me today with this family, so that's why I was a bit late. So Hmm. Hmm. however, just sitting there, whatever time we spent in hostels, I played hockey there for 2 years, Hmm. and after everything, I had good number of publications, patent, Hmm. Hmm. like from research wise, from personal life. I met my wife there, Hmm. and from friendship. So it was amazing, and same with the Stockholm. So Hmm. the opportunities that you get, you get to travel a lot. I've been in Helsinki last week. Just 1 year Hmm. ago, I was in US for meeting. Hmm. Hmm. So Hmm. you get everything as a Hmm. package. ओके। Uh, और गगन, अगर अगले 10 साल आपको प्रोजेक्ट करने हो, एनीथिंग फॉर यू, हाउ डू यू डू दैट? नो एंड बी, इफ आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू डाउन द लाइन, बट 10 साल के बाद आप क्या सोचते हो, क्या अचीव करेंगे? 10 साल के बाद सर, आई वुड लाइक टू बी इन अ पोजीशन ऑफ सम काइंड ऑफ पावर, लाइक ओके। इन नॉट पावर लाइक पॉलिटिकल पावर, बट टू बी अथॉरिटी, टू मेक हाँ, द डिफरेंसेस, टू मेक द थिंग्स, टू चेंज द थिंग्स, अंडरस्टैंड? yeah, लेकिन exactly, किस exactly. तरीके से? So I see myself in an organization where at the higher ends, where I can make difference, like I can
do some influential work that can change this, be useful for society. So either be a part of a company and then shape the future of that company, or to be in academics and then lead a group to solve the problems. So for example, like in India, I'm very much enthusiastic to solve a problem. Like if we can have some kind of solution for heat or the summer for a general public, like whatever, they can develop some kind of clothes or something which can help a certain poor people or people who are doing like labor work, Okay. yeah. So अच्छा, एक बात बताना गगन, जैसे कई कैंडिडेट्स बीटेक एमटेक के बाद अपना करियर स्टार्ट करते हैं, जॉब्स में चले जाते हैं। आपने लंबी जर्नी ली, आपने बीटेक किया, एमटेक किया, पोस्ट डॉक किया, सब किया, तो इन दोनों में कंपैरिजन तो वैसे करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या आर यू सेटिस्फाइड कि जितनी मेहनत की थी दैट वाज वर्थ इट? बीटेक में मेहनत की, एमटेक में मेहनत की, 6 साल आईआईटी में और लगाए बीटेक के बाद, तो वाज इट वर्थ इट? yeah, definitely it is. I don't have any. Yeah, definitely it is. As I mentioned, you get the opportunities down the line which you believe like would not have been possible अगर आप ये जर्नी ना लेते. So sometimes I feel like अगर मैं वो सब जर्नी ना लेता तो शायद स्टॉकहोम में ना होता. सही है. So which in itself is a and I also got PR from Canada just because of that. मैं वहाँ पे कभी गया भी नहीं हूँ, but still मैंने PR ले ली, तो वो भी प्लस है. और उसके बाद फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, आप कभी उसमें स्ट्रेस में नहीं रहते कुछ जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी. तो वो सब प्लस सिर्फ इस जर्नी का ही है. And then you can always explore. The one thing that it gives you the power to explore different things. Like Puneet, is my friend from Btech. We were at Kanpur together. So he went after PhD. He went to Bangalore, joined Tata, then Volvo. He was doing job for 3 years. Now he shifted back to academics. He went to US for postdoc. I think all these opportunities you only get if you have something at your back. चलिए गगन, इट वाज वंडरफुल. सो गगन, आपकी ये जर्नी इज रियली क्वाइट इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग. आप जेई एस्पिरेंट थे, फिर आपने वो 4 साल बीटेक में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला आईआईटीज में, लेकिन आपने 6 साल फिर इन्वेस्ट किए, आपने पूरा उसका वापस किया. सो यू एंजॉयड 6 years इन द कानपुर, और उसके बाद भी जर्नी कंटिन्यूज एंड इट इज वंडरफुल जर्नी. On the way you met your soulmate also, and now both of you are in Sweden, so that is wonderful. So thanks a lot Gagan, आपने time दिया for this interaction, and I look forward to interact with you once again after a couple of years, so that I can make sequel of this your interaction with you, and I can present your journey to those students who look forward to have wonderful career in their life. So all the very best, Gagan. Thanks. Always a pleasure to interact with you, Thank you. sir.